समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम बड़ आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज भिडियो आम मैंने आउ एक ख्रीष्टियन ताड़ना विषय में आलोचना करवा। आपण मान प्रत्येक को मोर चैनल को स्वागत आउ ए भिडियो को मध्य मु स्वागत करुँच। तेरे प्रिय बंधुगण भिडियो को आगू नेबा पूर्व मु गोटे सूचना आपण मान देवाई चाहे। तेरे सूचनाटी कौन? सूचनाटी यहीपरि जदि आपणकर मोबाइल को +91 बदल +92 जदि नंबर आसुअछि तबे भूल रे भी से कॉल को आप रिसीव करंतु नहीं। आउ द्वितीय सूचना होछि जदि आपणकर ईमेल रे जदि लास्ट रे .pk एमती जदि आसुची ईमेल आईडी रे कौन से मेल आसुची तबे ताको मध्य आपण रिसीव करंतु नहीं किबा कौन सी अजना फाइल को आपण बिल्कुल भी डाउनलोड करंतु नहीं। कारण ये समस्त विषय होछि आपण को फसैबार एक चाल अटे जोटा कि वर्तमान पाकिस्तान पूरा जोर सोर रे भारतीय मान को टार्गेट करिछि। तबे ठीक चलतु प्रिय बंधुगण आम आग को जीवा। घटनाटी यहीपरि आपण थंबनेल रु आपण जानि सारिथिबे मो क्यों विषय पर मु आलोचना करबा चाहूँचे। वर्तमान एक ताड़नार खबर आसी माने घटनाटा हूँ पंजाब गोटे जगार उपासना एमती चलुला समय विजाति लोक मैंने बाधा देले आठी कौन है विरोधी माने ख्रीस्टियन विरोधी एवं ख्रीस्टियन दुई जन मध्य कौन है किसी पाटितुंड है गंडगोल है। किंतु ए घटनाटा टिका हूँ अलग प्रकार। कारण आप जानिथिबे जतबेले विरोधी माने हमला करती बा जतबेले आक्रमण करती से माने चर्च उपर आक्रमण करती चर्च भांगी दियंती कि चर्च को जलि दियंती। आउ एठी जो घटना घटी अच्छी ये हूँ कौन सी चर्च को जला है किंतु अनेक ख्रीस्टियन लोक मानकर घरे पशिकी सेमानकर जिनिस पत्र को माने भंगारुजा कराई भांगी दिखाई। सर मेरा नाम रमेश है सन ऑफ जीता पिंड धारीवाल कलेरिया। सर मामला यह है कि जेडे जिन्हों ने भी गुंडागर्दी की है ना इन्हों चर्च तो बड़ी बारी डकिया। साडे नाल ही चर्च है, साडियां कुड़ियां शाम नूं रोज उत्थे प्रार्थना वास्ते जांदियां ही ते जिन्ने मुंडे आ समैक पी के ते कुड़ियां नूं भी गलत मलत इन्होंने लफ्ज कहिंदे ते इस करके इन्हों 2-3 वारी डक के पंचायत विच भी गल कीती ही। पंचायत ने इन्हों 2-3 वारी झिड़किया भी पर उसे रंजिश नूं इन्होंने अगे वधाउंदे होए घर ते हमला किया। इन्होंने सारा नुकसान वेखो तुसीं सारा कुछ वेख लिया वा जिड्डा वड्डा नुकसान ते कीता ही कीता। जिहड़ी बेअदबी इन्होंने औरतां दी कीती है ना जिहड़े औरतां दे कपड़े पाए उन्हां दे नाल इन्होंने पता नहीं की करन दी कोशिश की है। सब तो वड्डा गुनाह इन्हां दा इहो ही इन्होंने बहुत कीता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਆ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ SS ਮੁਖਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ 5-6 ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ मुख्य दोषी हो क्योंकि उन्हें ही सारा कुछ इन्ना को से जहाँ भी होना कहीं ये मध्य गोटे प्रकार ताड़ना आको इंग्राजी रे परसिक्यूशन बोली कह जाए। ये गोटे प्रकार ताड़ना अटे। तबे चर्च भांगिबा सेटा तो गोटे प्रकार ताड़ना एमिति ताड़ना वर्तमान आमर दृष्टिगोचर को वर्तमान आसी से आम को सतर्क रहा पड़ो टे सतर्क रही था प्रिय बंधुगण।
କାରଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟିପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହାମଲା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଯେପରି ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା 2000 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ 2025 ମସିହାରେ ଏ ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ସାଉଥ କୋରିଆ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଚାଇନା, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଆମର ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ହୁଏତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବିକି ହୁଏତ ଦୁଃଖ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଘଟୁଛି? ତାଡ଼ନା ଘଟୁଛି କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହି ରଖିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନା କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରିବେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ତାଡ଼ନା ହେବ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେମାନେ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏଇ ଜଗତ ଯଦି ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ହେଇଥାନ୍ତା, এই ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା କାହିଁ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ବାସସ୍ଥାନ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କରି କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଯଦି ତାଡ଼ନା ଆସେ, ବିଲକୁଲ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।